I can't believe it. Football, bloody hell. What's happening, दोस्तों? Sorry, थोड़ा लेट हो गया यहाँ पे. Was having a little bit of technical issues, but happy to finally be on. I can see अभी भी थोड़ा वीडियो ऑडियो में लैग है, but if you can hear me, please let me know in the comments कि अगर जो आवाज़ ठीक है कि नहीं. Deadline stream first time by FPL Bloody Hell या Football Bloody Hell channel. जो भी आपको डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ लीव इट इन द कमेंट सेक्शन and I will try my best to answer them as per whatever you feel it is. अभी के लिए फिलहाल let me just show you my team कि मेरा टीम क्या है अभी. And from there you आपको तब तक जो भी पूछना हो या सवाल जवाब होंगे तो सोच के रखिए. So this is my team currently. I hope you can see it कि आया होगा यहाँ पे. Let me adjust it a little bit. Johnston in goal, Estupinian, Chilwell, Botman, Rashford, Sterling, Mbuemo, Salah, Saka, João Pedro, Haaland, Turner, Udogie, Archer, Kabore. अभी मेरा ऑलरेडी एक फ्री ट्रांसफर था, मैंने वो ऑलरेडी मेरा फ्री ट्रांसफर कर दिया है वहाँ पे, बिकॉज आई हैड ए 1 वीक फंड. मुझे सॉन से साला करना था लास्ट वीक, डिड नॉट वर्क आउट. साला को ऑब्वियसली ज़्यादा पॉइंट्स मिले वहाँ पे, तो ठीक है. And I immediately got Salah back in because I feel that he's one to keep going ahead over here, right? तो anyway, अगर जो आप लोगों ने भी ऐसे कुछ moves किए तो don't too much worry about it. Season के अभी 5 गेम भी खत्म हुए, गेम वीक नंबर 6 है. Before we go into the episode, थोड़ा like subscribe कीजिए if you like the video, if you like all our other videos as well, and please make sure कि आप आपके friends को भी बताएं. We'll try our best to do more FPL videos, preview the videos as well, or more live deadline streams over there too. So this is what my team is currently like I told you. अभी यहाँ पे मैंने मेरा एक ट्रांसफर तो ऑब्वियसली फ्री ट्रांसफर कर दिया है यहाँ पे. तो now the question is, do I take a -4? अभी फिलहाल तो I feel कि -4 की कुछ ज़रूरत नहीं है. Even if I feel कि I am not at an advantage right now, like I said, 600k रैंक है अभी. If Chilwell खेलता तो he would have got 6 points, clean sheet पूरा गेम, out of 300k. While इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है I still feel कि my team, I don't know, was not very well rounded. अगर जो आपको भी ऐसे डाउट्स है, if you feel कि your team is also not 100% there, तो I feel वाइल्ड कार्ड के लिए what you need to do is, मैं ड्राफ्ट तो बताऊंगा इसमें, but for a wild card I feel you need to still have a lot going wrong with your team. वाइल्ड कार्ड के लिए you need to have एक दो इंजरी, या अभी एजे जो नहीं खेल रहा है, प्लस जाओ पेड्रो जो बेंच रोटेशन रिस्क है, प्लस चिलवेल. यूनाइटेड एसेट्स का देखो, एक चीज होती है कि स्मॉलर टीम्स यू सी, आई एम नॉट कॉलिंग यूनाइटेड अ स्मॉलर टीम, लेकिन समझो आप अपने लूटन से 2 स्ट्राइकर लो या यहाँ से 2 स्ट्राइकर लो, किधर से भी लो. यू डोंट हैव टू ऑलवेज लुक एट की रिजल्ट कैसे मिलेगा, यू लुक एट द प्रोबेबिलिटी कि एसेट से स्कोर कितना मिलेगा. अभी लाइक यू सॉ अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, अगेंस्ट ब्राइटन, यूनाइटेड के प्लेयर्स स्कोर कर सकते हैं लेकिन थोड़ा डिसजॉइंटेड है टीम अभी. तो आई फील कि अभी भी यूनाइटेड के एसेट्स के दोनों मिडफील्डर आपके पास हो तो रख लीजिए. बट या टू कमिंग टू दैट कि वाइल्ड कार्ड करना ही है, जो अभी मेरा टीम जो है, आई फील कि आई एम मिसिंग अल्वारेज, क्योंकि अल्वारेज गोल मारेगा, ऑलमोस्ट 28% ओनरशिप है ओवरऑल, तो मेरा रैंक काफी गिर सकता है. बट अल्वारेज छोड़ के इतना मैं किसी को मिस कर रहा हूँ ये वीक के लिए. आई मीन मैडिसन, सॉन इज देयर, बट अगेंस्ट आर्सेनल टफ फिक्सचर है, उसके बाद लिवरपूल, तो मे बी मैं आई कैन पास ऑफ द रिस्क, ज्यादा कुछ करना नहीं है उधर. बट आई फील कि मेरा टीम ठीक ही है. स्टर्लिंग का ऑब्वियसली अनलकी था गाइस, लास्ट वीक स्टर्लिंग कुड हैव इजीली हैड 2 गोल्स, इफ नॉट 2 गोल्स 2 असिस्ट, राइट. तो आई थिंक वो अनलकी था. एम्बुएमो तो मेरे पास है ही, तो आई एम वेरी ओके विद हिम फॉर नाउ अगेंस्ट एवर्टन. -4 के लिए भी मैं बहुत ही कहता हूँ कि थिंक एंड टेक योर हिट्स, राइट. एंड ऑल्सो फ्लिप साइड इज दैट टेक योर हिट्स, बी अग्रेसिव. तो मेरे अंदर ही वो 2 पर्सनालिटी कभी कभी होती है. आई नो आई हैव ऑलवेज गिवन सम टाइम अ डिफरेंट ओपिनियन, बट फॉर मी व्हाई आई वुड टेक अ -4 ओनली अगर मुझे मालूम पड़ता है इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर, डेडलाइन अभी 6 बजे इंडिया टाइम, तो वी हैव 35 मिनट्स फॉर द डेडलाइन, राइट. तो आधे घंटे में अगर जो हमको मालूम पड़ता है कि चिलवेल नहीं खेलेगा, विच अनलाइकली क्योंकि कल गेम है, तो आई फील कि 1 मोर वीक
Villa, Chilwell doesn't feel like an asset who's dropped by a manager, right? शायद वो लेफ्ट बैक पे वापस चला जाएगा. I won't be attacking as much. तो लेट्स आई थिंक वेट वन मोर वीक. बट हाँ, अगर मुझे लगता है कि मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, आपको लगता है यू डोंट वांट टू वेट, यू फील कि यू रियली कांट वेट, एंड यू वांट टू टेक एन अग्रेसिव मूव, आपको चलेगा -4. चिलवेल से यू कैन ऑब्वियसली गो टू बॉटमैन इफ यू डोंट हैव. मेरे पास बॉटमैन तो है, 4.6 बॉटमैन है. शार एट 5 इज आई थिंक बॉटमैन बेटर शाउट आउट है वहाँ पे. You can also anyway downgrade down to a Chelsea asset you think will keep 2-3 clean sheets, क्योंकि Chelsea के fixture I think game week 9 के बाद turn होते हैं, तो you still have 3 games in which you can get a Gusto या Colwell over there, right? तो वहाँ पे you can still save 1 million in the bank, correct? तो I feel कि those are the moves you can make, maybe to transfer players out. I will show you my wild card very quickly, but before that, just in case whoever is still tuned into this episode, at least I know कि पहला stream है, बहुत ही कम notice दिया, तो I don't expect more than 30-40 viewers overall. But anyway, for the ones who joined in, thank you so much. Delay भी हो गया, and again apologize for that. थोड़ा audio और video का technical issue था. I think you can hear me now. तो मुझे thumbs up तो एक मिला था WhatsApp पे. So yeah, I feel कि जो भी वाइल्ड कार्ड कर रहे हैं ये वीक, मैंने ऑलरेडी बताया कि यू नीड टू हैव एक्स नंबर ऑफ थिंग्स गोइंग रॉन्ग विथ योर टीम, राइट? तो मैं आपको एक वाइल्ड कार्ड ड्राफ्ट बताता हूँ मेरा अभी. लेट मी चेंज द स्क्रीन सेटिंग अभी के लिए एंड शो यू अ वाइल्ड कार्ड ड्राफ्ट हियर. आई होप अगेन मैं चेक करता हूँ यू कैन सी दैट टीम प्रॉपर्ली. यस यू कैन. तो यहाँ पे मेरे पास है, इफ यू आर वाइल्ड कार्डिंग, यहाँ पे थोड़ा आइटरेशन है, तो थोड़ा बेयर विथ मी. You have goal main option to go for a double Newcastle defender, double Newcastle in defense. Areola and goal I think makes sense क्योंकि उनका although wild carding now 2 हफ्ते के बाद उनका fixture run पूरा change होता है, तो I think if you're wild carding that's the point ना, थोड़ा future का भी सोचना पड़ता है. So you can either leave Turner and goal. यहाँ पे मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि मैंने ट्रिपियर भी लिया है दिखाने के लिए, तो टर्नर से अलावा यू कैन गो टू फ्लैकिंग. अभी लेनो के फिक्चर्स थोड़े मिक्स बैग है, बट लेनो लुक्स इन डिसेंट फॉर्म, बट आई फील फ्लैकिन एंड एरियोला गुड रोटेशन हो सकते हैं दोनों के. टू न्यूकासल डिफेंडर्स, बॉटमैन तो मेरे पास था, तो आई थिंक बॉटमैन एंड शेयर भी चल सकता है, बॉटमैन ट्रिपियर भी चल सकता है. एस्टुपिनियन लीव हिम देयर. उडोगी है यहाँ पे, उडोगी से यू कैन गो डाउन टू मे बी गुस्टो. आप एक एस्टन विला डिफेंडर को लेके आ सकते हैं बिकॉज उनके फिक्चर भी थोड़े अच्छे हैं. यू कैन गो टू कैश, मे बी पाउ टोरेस. मिडफील्ड में मैंने रखा है यहाँ पे फिल फोर्डन, साला, डियाबी, एम्बुएमो, साका. अटैकर्स में टर्नर, हालांड और अल्वारेज. अभी आर्चर, सॉरी, अल्वारेज एंड हालांड. नाउ द थिंग ओवर हियर इज कि मैंने यहाँ पे रैशफोर्ड नहीं रखा है, एंड ऑब्वियसली आई एम थिंकिंग दिस वीक कि देयर इज नो नेसेसरी दैट यू हैव टू टेक आउट रैशफोर्ड. आई थिंक अगेंस्ट बर्नली यूनाइटेड स्कोर ही करेंगे, तो आई वुड से होल्ड ऑन मे बी. बट आई एम लाइक, अगर आपको रिस्क लेना है, आप वाइल्ड कार्ड कर रहे हैं, आपको लगता है यूनाइटेड के एसेट्स बकवास है, मुझे करना ही नहीं है, चाहिए रखना ही नहीं है, तो यू कैन मेक द अग्रेसिव मूव नाउ. डियाबी बजट में आ सकता है, बट दैट बीइंग सेड, समझो अभी मैंने ट्रिपियर को यहाँ से निकाला बिकॉज ही इज एक्सपेंसिव, यू स्टिल वांट टू गो डबल न्यूकासल डिफेंस, तो मैं शेयर लेके आऊँगा, तो आई कैन रिमूव डियाबी. 8.2 आ जाता है वहाँ पे. यू कैन गो इन फॉर अ मेडिसिन फ्यू डाउन द लाइन, नॉट दिस वीक एटलीस्ट. यहाँ फोर्डन से आई कैन गेट रैशफोर्ड बैक इफ आई डू दैट. बस इतना ही बताना था कि ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं. आई फील कि सॉरी, यहाँ पे एक चेंज करना था. हाँ सॉरी, मैंने वापस स्टर्लिंग को डाल दिया. यहाँ डियाबी रखना है आपको. And then you can have this team. So you can have Turner, Areola, 0.3 in the bank. So you can even go up to slightly better keeper. Estupinian, Shar, Botman, Udogi, या Cash, Saka, Mbuemo, Diaby, Salah, Rashford, Haaland, Alvarez, Archer. City के fixtures भी 2 week बाद turn होते हैं guys. You can see कि City's fixtures are getting थोड़ा difficult over there. I feel कि Nottingham Forest, Wolves, Arsenal, Brighton, United, so those 3, Brighton could be easy potentially. फिर Chelsea, Liverpool, Spurs. तो I think Game Week 15 तक उनके fixtures फिर
चेंज होते हैं, बट टिल देन आई थिंक अल्वारेस करंट फॉर्म में है और आप आज के, बट इफ यू आर एटलीस्ट वाइल्ड कार्डिंग टुडे, आई थिंक अल्वारेस को लेना बहुत ही ज़रूरी है. इफ यू होल्ड ऑन टू योर वाइल्ड कार्ड, क्या कौन से प्लेयर्स को लेके आ सकते हो, इन अ चीप बजट वे? यू कैन प्रोबेबली लुक एट गेटिंग इन down the line if Newcastle, if Newcastle are looking better, Wilson, you can look at getting Edward. Crystal Palace से वो उनके फिक्चर्स डिसेंट है, लेकिन थोड़ा इतना फॉर्म नहीं लग रहा है. यस, एडवार्ड को मिले 2 गोल, but they're not looking like the convincing side you've seen before, right? Just again, people who are tuning in, please, जो आपको कुछ टीम हेल्प चाहिए तो अपने कमेंट्स में डाल दीजिए कि what your doubts are and help you with your moves. Anything that you'd like to share, you just like to tell us what your team is, I'm happy to help you out over there. थोड़ी देर के लिए I'll just let you all see and look at this wildcard team and look at how everything is going so far. Well, मेरे लिए, like I was telling you earlier, अभी ये वाइल्ड कार्ड टीम है. विल आई वाइल्ड कार्ड टुडे? बिल्कुल नहीं. मेरे पास वो -4 का ही चक्कर लग रहा है कि मैं लूँ कि नहीं. साला तो आ गया टीम में, राइट? अभी चिलवेल को लेकर आई कैन गो डाउन टू गुस्टो. बैंक में 1.2 हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए. इनफ टू गेट अल्वारेस? नॉट रियली, नॉट येट इनफ टू गेट अल्वारेस अनफॉर्चुनेटली फॉर नेक्स्ट वीक ऑल्सो. तो मुझे लगता है चिलवेल को डाउनग्रेड करके मुझे कितना फ़ायदा कितना हो रहा है, राइट? तो आप अगर जो ऐसे -1 लेते हो तो आप थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. बट अगेन रिमेंबर कि डेडलाइन अभी आधे घंटे के अंदर है, 29 मिनट्स इंडिया टाइम. तो डोंट फॉरगेट लॉक इन योर टीम. अभी कोई टीम लीग तो आया नहीं है, ये तो बड़ा एक अलग ही है कि टीम लीग्स आर गुड, टीम लीग्स आर बैड, what should you be doing, right? I feel कि देखो यार, अभी it's part of our environment, team leagues are there to stay. तो if you are an engaged manager, use the leagues. अभी obviously caveat तो आपको सबको मालूम ही है, right? कि टीम लीग्स आर वेरी detrimental to the game, some people say, जो प्योरिस्ट को लगता है. लेकिन लाइक आई सेड, अभी आप खेलते हो और आप अभी बैठे हो और आपको मालूम है कि आपके पास चिलवेल है, अभी चिलवेल नहीं खेलेगा, तो क्यों टीम में रखना? आपने ट्रांसफर यूज नहीं किया है. एंड एट द सेम टाइम आई आल्सो एग्री कि थोड़ा मजा चला गया है, बट ऑल इन ऑल आई फील कि अब इट्स व्हाइल एज लॉन्ग एज इट्स इन द एनवायरनमेंट एंड इफ यू आर लकी कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो या यूज इट, राइट? अभी मैं देख रहा हूँ कि ऐसे तो मुझे टीम लीग आ रहा तो नहीं है. आई एम नॉट लुकिंग एट टू सी कि अगर कोई हिट्स है कि नहीं यहाँ पे, बट nothing in particular that I've got so far. यहाँ पे ट्विटर पे नॉर्मली मिल जाते हैं बहुत सारे अकाउंट्स हैं. टीम्स लीक, टीम्स न्यूज़ एंड लीक करके है एक अकाउंट, वहाँ से मिलता है. तो लॉट ऑफ दीज अकाउंट्स नॉर्मली लीक द न्यूज़. एवरी क्लब स्पेसिफिक होते हैं कि जो अकाउंट जो उनके अंदर से सोर्स है. तो आई थिंक डेडलाइन के 20 मिनट्स पहले थे नॉर्मली समटाइम लेट यू नो कि टीम लीक्स होते हैं. अब यूज़ करना कि नहीं वो आपके ऊपर है. एंड देयर इज अ चांस कि यूजुअली तो दे आर राइट, बट देयर हैज बीन अ वन और टू scenarios ki wahan pe the leaks were wrong and they made the managers absolutely crazy, and jo managers have nicely tuned away at 5 o'clock 1 hour before were better for it, right? So team leaks or news and stuff is very different. Again, jo bhi dekh rahe, thank you so much guys for tuning in. Just leave a like on the video, subscribe to the channel. I understand कि मैंने बहुत ही जल्दी ये लेट stream चालू किया है. lot of technical issues था unfortunately, but happy to be on this stream right now. आगे जाते हुए obviously I know we don't have a lot of subscribers, but I will be doing more live streams on FPL. Pre-recorded वीडियो तो ज़्यादा ही होंगे, mainly 90%, but I feel at least महीने में 2 तो live stream करना है डेडलाइन पे, right? वो the best part to help people in the community, help people on YouTube को बहुत ही वहाँ पे people are out looking for advice, right? वहाँ पे भी नहीं तो remember कि we are MEFCM Mumbai है Twitter पे. You can always just look at our FPL posts on Twitter and below that put your team कि मुझे ये doubt है वो doubt है, and happily I will help you out. There are other people also who will help you out with your any FPL doubts at least वहाँ पे. So like I said कि यहाँ ये वाइल्ड कार्ड टीम के बारे में यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस तो नहीं कर सकते, बट आई फील आइडियल सिनेरियो वाइल्ड कार्ड के लिए गेम वीक 8 या 9 है. अभी अलग ही बोलते हैं कि गेम वीक 18-19 भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे सिटी और ब्रेंटफोर्ड का ब्लैंक होगा और 21 में उनका वापस डबल गेम वीक होगा. तो गाइस रिमेंबर, वाइल्ड कार्ड 1 आपको हर साल 2 वाइल्ड कार्ड मिलते हैं. वाइल्ड कार्ड 1 ये साल 20 के पहले यूज करना है, करेक्ट? क्योंकि वहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा वाइल्ड कार्ड आ जाएगा. सो देयर इज अ चांस अगर आपका टीम बहुत ही अच्छा जा रहा है, अभी लाइक मैं वाइल्ड कार्ड क्यों करूँ? विद ऑल मीन्स, राइट? डोंट वाइल्ड कार्ड इफ यू डोंट हैव टू. बर्न कर दो पूरा ही, जरूरी नहीं है तो. बट अगर जो इन द एंड रिमेंबर गेम वीक 19 इज अ चांस फॉर यू टू सेव इट टिल देन, तो कीप एन आई आउट फॉर दैट. जिनका टीम बहुत ही अच्छा है. हाय देवरा, थैंक यू सो मच.
I hope you've got it with the tips you asked for. Ki Chilwell, unfortunately, no news yet. Not that I am getting anything, at least, unless kuch lag or delay there is over here. But I feel overall, we are pretty much set for this week. Salah and for Son back into my team. 8 point गवा दिया last week, unfortunately. Overall, Liverpool, I think, I look very good. अगर जो आपको लगता है कि नहीं मैं डियाज को लो, डियाज was actually one of my picks start of the season. डियाज से 2 गोल भी मारे थे. But अभी इतना रोटेशन हो रहा है, especially यूरोपा में. And I feel कि Klopp is looking at after the first game against last के साला को ज़्यादा रेस्ट मिलेगा. तो फिर ज़्यादा ही नो ब्रेनर बन जाता है कि let's keep Salah in your FPL teams, because more likely he'll play more minutes in the Premier League than in Europe, right? Jota is a good asset, Nunes is, but Nunes Jota gap को और Diaz का बहुत ही rotation हो रहा है, तो I feel Salah is a good pick over here. Not necessary कि आप साला के लिए अभी बैंक तोड़ के -8 लेके साला ले लो, वो भी नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर आपके पास बैंक में पैसा है, no moves to make, वाइल्ड कार्ड आपको लगता है कि 15 के पहले नहीं यूज करना, 16 गेम के पहले यूज नहीं करना है, तो might as well, there's a good chance कि if you have Rashford, maybe you can do Bruno to Salah ये week. बैंक ट्रांसफर करके obviously next week you have more data. West Ham is a थोड़ा tough game. Liverpool के पास थोड़ा concern था ट्रेंड का etc. But should be there I think. तो but if you're not sure, wait for a week, bank transfer and always use to the next week, right? Ask me a question below guys. मैं बैनर में वही डाल रहा हूँ. And share your teams. मैं वो लिख रहा हूँ, so it's easier for you all to, I don't have to keep repeating it. For like I said, for now, not getting any teams per se, so I think this looks like the most solid team. Mainly क्या होता है कि अभी जो team leagues आते हैं, like I told you, you'll understand about Alvarez. For example, अभी City 7:30 बजे खेलने वाला है, correct? So I feel कि अगर जो you come to know, for example, कि you're about, if anyone who's just joined him, talking about team leagues earlier. टीम लीग्स का ऐसा ही होता है गाइस कि समझो अभी अल्वारेस है 7:30 बजे खेल रहा है, उसका अभी मुझे इन्फॉर्मेशन आया, लड़का सर आई एम नो प्रो, मैं 3 साल से एफपीएल खेल रहा हूँ, सीरियसली वैसे तो 12 साल से खेल रहा हूँ, और आई ट्राई टू बिकम मोर सीरियस एट इट, मोर लाइक मोर एंगेज्ड. लास्ट ईयर 7,000 के इन द वर्ल्ड हाईएस्ट, सॉरी 7,000 इन द वर्ल्ड हाईएस्ट रैंकिंग, 2 सीजन्स बैक 11,000, उसके बीच में 200,000, better rankings than in the past, right? And I like that because if I'm more engaged as a manager, I'm not an expert, but if I get a league and I want to help my friends, I will. But obviously, वो star बोलूँगा कि team leagues are dangerous. There is a chance that they could go wrong or someone is messing around. But by and large, Twitter community has been safe that way, and they share leaks which are only 100% confirmed, right? But हाँ, फिलहाल के लिए तो I have nothing about Alvarez or nothing on Twitter about Alvarez at least. मैं तो like बोला कोई IT के या expert नहीं हूँ. But अगर जो मुझे कुछ भी आया तो obviously I will let you all know. अच्छा अभी मैसेज आया है on the side. मेरा सॉरी आई थिंक ट्विटर लेट लोड हुआ. Alvarez और Phil Foden are going to start. तो अभी मैसेज आया है. तो मैंने जैसे आपको बताया कि पहले वाइल्ड कार्ड में मैं वापस उधर ही वाइल्ड कार्ड में जाता हूँ कि आई शोड यू कि यू कैन मे बी गेट Phil Foden ओवर हियर. अगर जो रैशफोर्ड नहीं रखता है एंड इफ यू आर टायर्ड तो Foden एंड Alvarez दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर सिटी ट्रिपल अप राइट नाउ इफ यू आर वाइल्ड कार्डिंग. Just to clarify कि जो अभी suddenly have tuned in right now, no Burnley defender today. Yes, Deva, that's why I just got the load on Twitter. Unfortunately, my Twitter wasn't loading fast enough while I was live streaming. I don't know what happened. I'm having a glitch today with my video. The other day it was with the audio. I guess as you learn to live stream on YouTube, guys, you'll get better at it. Hopefully, I do. Nirvan, no Burnley defender today. I got your joke. I'm going to ignore it. Nirvan, as you know, क्या प्रकार में एपिसोड में आता है, आर्सेनल फैन है, also भाई है. तो no Nirvan, I feel United, even though it's tough more night under than those night lights, windy, I feel United will get the win today. Win नहीं आया United को guys, तो off center थोड़ा होता हूँ. I fear for Eric Ten Hag. I don't want him to go, but अगर जो आज हार गए तो I mean I don't even know what's going to happen on Twitter. Doku, yes, Doku, Ford and Alvarez all 3 start. So अगर जो मैं वाइल्ड कार्ड कर रहा होता तो I think Alvarez 100% होना चाहिए, और same as Phil Foden, I feel it's a very good attacking unit. और with injuries this time, normally City का क्या होता है, you don't know Pep Rule. If you are new to FPL this year, guys, Pep Rule is the thing.
आप अगर फोरन को लेते हो तो 3 हफ्ता वो ग्रीलिश खेलेगा, ग्रीलिश को डालते हो वापस फोरन को लेके आएगा. Never really clear with Pep Guardiola, right? So I feel this year with the 2-3 injuries and player departures उनके पास जो है, Bernardo Silva especially and De Bruyne, Alvarez, Doku या Foden में से बहुत ही कम रोटेशन होगा. If they eat each other's minutes, बाकी वही होगा. तो Doku will be guys एकदम differential होगा. मैं आपको थोड़ा Doku का बताता हूँ कि क्या है उसका ओनरशिप. 6.5 and ownership 1.6. तो guys, कोई भी player ownership उसका for first time players under 5% we call it a differential in FPL. तो wildcard में at 6.5, yes, Doku is a good differential. And you can in that case also hold on to Rashford. आपको ये चाहिए कि नहीं मुझे differential जाना है, Doku instead of Foden for 2-3 weeks. Rashford को रख सकते हैं. In the end, United का fixtures, when United fixtures go bad or United are really poor, you can make the move after Liverpool game to Son या Madison. तो I think ऐसे you can rotate your squad. ऐसे थोड़ा long term सोच होना चाहिए. Not till game week 16-17, but at least once you wild card for 5 game weeks, so you help yourself, right? वरना wild card करके next week -4 unless injuries हुआ तो बहुत ही pointless हो गया ना. तो थोड़ा सोच विचार कुछ भी हो वहाँ पे तो let me know. Apart from this, what are my thoughts over there? I feel कि यार this season I'll talk about myself mainly कि I feel United की तरह मेरा भी start हुआ रहा है थोड़ा FPL में. Not very bad, look like I said, अगर जो मेरे पास Chilwell है और last week Chilwell start होता, Chilwell के 6 पॉइंट या 5 पॉइंट भी आते तो I'd be at 300k, which is not a very bad rank at all in the start for the first 10 game weeks. लेकिन you know normally when you start your game week, when your season well, आप एक प्लेयर को आइडेंटिफाई करते हो, आइडेंटिफाई करके you ride on that one player which is slightly different. वो Alvarez था this year, right behind Haaland if you look at Alvarez's points. Alvarez second है लिस्ट में points के लिए. He's got 9 last week, 14 against Fulham, goal against Newcastle and assist against Burnley. तो guys उसका टच बहुत ही अच्छा रहा है. 37 points वर्सेस अगर जो मेरे पास जो है वो था जाओ पेड्रो. तो I'll show you कि ऐसे how there's a small difference in players and how it matters. So जाओ पेड्रो के देखो guys points है 17 और यहाँ पे बताया 37. ऐसे swing होता है player का point. Now I went for Salah in the start, from the start, where managers were rotating between they were rotating in between Madison, Sterling. तो वहाँ पे last week where Salah did well, I took that 1 week punt. तो मैं चल chance ले सकते अभी is not going so well. You can go up and probably take a hit. वो didn't work out. So I mean that's why 30 points compared to last year I'm down. And it just comes down to guys ऐसे दो player में ऐसा हो सकता है and that's what happens. Devrat, yes, Guardiola also starts, guys. Devrat, thank you so much. I just loaded that on the side. Kabore or Udogi. यार Luton against Fulham थोड़ा unlucky था. And I feel Udogi मतलब attacking तो है, but मुझे लगता है कि Arsenal will score more than 2 to draw मेरा prediction था. I would say, and you can obviously shoot the messenger later, but Arsenal will score more. तो मुझे लगता है Udogi नहीं ये time Kabore शायद is a better 1 week punt against Wolves. Also have been struggling. Wolves के कुछ ज़्यादा काफी कुछ किया तो नहीं है Wolves ने. So I will just show you guys right now. So while Jose Sa has done well, Wolves has got 1 clean sheet against Everton over there. बाकी कुछ Liverpool tough game है, but Palace, Brighton, United, like I know the games are tough, but they're not looking the best too, right? अभी वो हो सकता है एक and thank you for the question by the way, Abdullah, that what do I do in this case कि against Luton maybe Wolves finally show up. That is true. But if there's a week where you feel कि differential थोड़ा खेलना है यहाँ पे and a lot of managers are going to bench Udogi because against Arsenal, maybe you can look at it that way. I will start Udogi and maybe he scores an Arsenal, don't do anything, or he assists Madison. Or I'll keep safe, go for Kabore. Maybe Kabore gets clean sheet, will struggle to score, Luton hold on for a clean sheet, right? I would say maybe Kabore just by a little bit over Udogi. Final pick वो मेरा होगा. Currently, मैं आपको अगर जो बताऊं मेरा team, well, I can't show that to you right now again, sorry, screen. But in my team, Udogi is first on the bench and Kabore is behind him.
but दोनों मेरे bench पे हैं. But yeah, I feel कि maybe before the deadline I might switch Udogi and Kabore around myself over there. That's what my thought is. I'm not 100% sure, guys. और कुछ 100% sure नहीं हो सकता है. Those 5 minutes before the deadline, you want to suddenly switch and have hopefully you think the best player. So kabhi kabhi you don't really come to know, right? So if you're still tuned in, just make sure you leave a like on the video, guys, and subscribe to the channel if you don't subscribe already. Thank you for tuning in. I know last minute I was late to this to the live stream. I will have more videos coming up on FPL. I'll develop the videos better. I know there are a lot of FPL video content creators already out there. लेकिन मैं 3 साल से भी खेल रहा हूँ seriously. उसके पहले भी time pass में खेलता था. But yeah, let me know any other questions. And if nothing else, just share your team. Maybe your team is better than mine. I am 600k in the world, guys. So I feel maybe there are people out there who have a better team than me or ahead of me. So I think people in the chat would also like to know who has a better team than them over there. So do let me know that. Otherwise, I'll probably end the stream in about 5 minutes because I feel कि leaks भी आ गया है. मेरा transfer भी locked in है. Not much surprise left today. That way कि कौन नहीं start करेगा. Alvarez अगर miss हो जाता तो wow, early transfers were already been in the mud, right? And then you probably look at किसको last minute. Money for Wilson for Newcastle. So I don't think any of that's happening today. So I feel I can end the stream in 5 minutes. But yeah, if you have Guardiola, like we saw earlier, Guardiola, Foden, Doku, Alvarez all start. अगर जो आपका कोई यूनाइटेड का है asset, I repeat, Bruno Fernandes, Rashford, maybe hold on one more week. Burnley के against points लाना ही लाना यार, नहीं लाया तो मैं यूनाइटेड की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन I feel लाएंगे ही. और अगर जो नहीं हुआ बोलता है नहीं, like I'm repeat कर रहा हूँ from the start of the stream if you joined in now. I think Bruno up to a Salah this week also is not a bad shout, yaar. Yeah, Bruno down to a Foden. Yeah, Foden start कर रहा है. Nottingham Forest should be a good goal scoring fixture. और किसी ने मुझे DM किया था कैप्टेंसी. भाई मेरे में तो ये वीक में कुछ दम नहीं है to go against Haaland at home versus Nottingham. Yes, he's looked a little. I mean फिर भी गोल मारे हैं, but he's missed quite a few sitters in the last 2-3 games. बहुत ही sitter miss किए, लेकिन I feel नहीं यार. I think he can do it this week, so I would not look beyond it. But आप अगर जो एकदम ही casual player हो, मुझे बोलते हो कि I think उनको segment करना चाहिए, guys. Let me know कि what do you think. I'll sit with you in front of the camera like this, and then like the Elmo one, I'll sit with my hoodie up and give you -4, -8 वाले transfer for casual players to just have fun. But yeah, अगर जो आपको थोड़ा मजा करना है, feel कि नहीं यार, I feel मेरे को हरान नहीं करना है. I don't care, मुझे तो अलग करना है. Mbeumo against Everton on penalties. Good pick. मैं थोड़ा डर रहा बोलने के लिए, but yeah, I mean apart from that again कोई है भी नहीं इतना अच्छा pick, right? Sterling against Villa definitely not. Maddison Son against Arsenal नहीं, Saka similarly नहीं. तो differential pick की वजह से भी look, if United was in good form playing Burnley away also बोलता है ठीक है Rashford Bruno को डाल दो differential के लिए. But एक तो मत करना ये week और बहुत मस्ती के लिए करना भी है, तो मैंने तो बोल दिया मेरा Mbeumo और worst case Rashford, but ज़्यादा आके इधर पिटना और गाली मत देना. But I feel anyway, guys, कि deadline is approaching, and I think ज़्यादा तो I can't recycle the same information again. With wildcard का draft, I will just leave it here for anyone joining in right now. तो आपको और एक look मिले यहाँ पे before I log off. Happy to let's leave this over here, guys. We're just joining in. Wildcard draft is on the screen. Have a look at it once. Doku starting, so I put Doku in. Good have Foden instead of Rashford and start Diaby instead of Doku there. You can also have a Newcastle defense double there. I have share. You can also instead have Foden and Diaby and take a share up to Trippier if you feel that Newcastle are getting into groove, right? My only worry is that Newcastle playing in Europe, Brighton playing in Europe. Like today, there's a good chance that Estupinian also, guys, Papa's bench pe hoga because he played midweek. And I have Kabore Udogi on the bench. So, it's not a bad enough bench. I mean, 2 point aayenge, 1 point aayega, worst case. But I feel this week to remove Estupinian doesn't 100% make sense. अगर जो आपको लगता है कि defender निकालना ही and uncertainty बहुत है, Chilwell is the guy people are looking at because we feel Poch will not start him. And that's again where my dilemma is -4 ka. I feel I want -4 in the next 10 minutes before the deadline. I don't think it makes sense, honestly. But, sometimes as FPL manager, when you have a poor start like me and you're used to thoda rank chasing and a good rank, kabhi-kabhi thoda kuch bhi aa jata hai, right? But to be fair, अगर मैं Chilwell को निकालूंगा तो किसको लाऊंगा, like I told you. Move to an Aston Villa defender, Cash Pau Torres.
I can go to a Gusto 4.2 money in the bank, like I said. Chilwell से पैसा थोड़ा बच के I'll get maybe a chance to go to Alvarez in 2 weeks. तभी City के fixtures turn हो गए. Maybe Grealish is back. Maybe we see rotation. KDB को थोड़ा time है. So I feel there's a lot to think about. Just that -4 from Chilwell down to Gusto. Maybe Gusto keeps another clean sheet. Colville at 4.5 keeps another clean sheet. You have Chilwell. वापस last week की तरह you get a 0. So you have had managers against you who have Chilwell, who have Gusto and Colville, and they have 12 points by tomorrow night. And you are down with 0 there with Chilwell, and you get a bench player coming in with 2 points. So वहाँ पे आपका net -10 score होता है. So yes, this is how you lose ground on FPL gradually. People wonder कि अरे यार, how does someone lose ground suddenly? ऐसे कभी-कभी with bad player picks, not bad because you chose wrong, because of bad luck, right? In Chilwell situation, just bad luck. Suddenly उसने मुड्रिक को खेला और बोलता Chilwell बहुत attacking है, डिफेंसिव के लिए भी शायद नहीं खेल सकता है. थोड़े बहुत ambiguous comment थे, पोचलिनो के. तो I don't think कि it's a bad pick. Chilwell was ever a bad pick. I think it's just bad luck. And I don't know कि मुझे और एक शायद गेम वीक रुकना चाहिए. I feel कि थोड़ा है कि I will wait. And just to close off, there's guys कि next week एक double game week है, where Burnley and Luton are playing 2 game weeks. Again, आप बोला Burnley Luton की क्यों बात कर रहे हो यार? Again, if you're casually playing और आपके पास 2 transfer है and your team is very set, but you have money in the bank, you have Archer, आपको नहीं चाहिए. 5.5 Morris for a double game week against Burnley. Never know. मेरा पिक तो फॉस्टर था यार गाइस, लेकिन फॉस्टर को रेड कार्ड मिल गया. हद ही हो गई यार. ऐसे मतलब छोटे चिंदी विंदी डबल गेम में मजा नहीं आया ये टाइम फॉर द फर्स्ट ऑफ द सीजन वैसे. तो आई थिंक वहां पे डबल गेम में कैसे होता है कि समटाइम्स यू कैन टारगेट प्लेयर्स प्लेइंग ट्वाइस, राइट? यस, रोटेशन रिस्क अगेन. संडे गेम है, वेडनेसडे गेम है, रोटेशन हो सकता है, बट दिस अर्ली इन द सीजन वेरी अनलाइकली. I'm not saying go for Burnley or Luton players, but if you want to have fun, you have nothing better to do. 2 transfer है, your team is set, you wildcarded 2 weeks back, transfer burn नहीं करना है, bench player ही है. Maybe you can see Archer is a starter, yaar guys, for Sheffield. I'm not saying he's a bad player, but masti karni hai. Or if you're playing with a 4-5-1 and you have 2 Dutch strikers, make 1 Dutch striker, a Morris. Maybe have a look. Maybe you can play him next week. You're tired of João Pedro's rotation. शायद ये वीक फर्ग्यूसन खेलेगा, वापस नहीं खेलेगा, जाओ पेड्रो खेलेगा, वी डोंट नो. एंड इट सक्स. मुझे लगता है मैं जाओ पेड्रो को निकालूंगा, बट आई फाइट आई कैन लुक एट मॉरिस मे फॉर नेक्स्ट वीक. बट दिस वीक आई डोंट नो इफ आई वांट टू प्ले मॉरिस अगेंस्ट वुल्व्स. लाइक आई सेड कि वुल्व्स कुड कीप अ क्लीन शीट टू बी 0-0 एंड इट विल बी -4. तो -4 के लिए तो डजंट मेक सेंस फॉर मी, राइट? बट या, इफ these are the moves you have, you can consider all of this. But anyway, again, thank you guys so much for tuning in. I don't feel कि ज़्यादा कुछ बात करने को रह गया है. Tune in to all our other episodes on Football Bloody Hell. Subscribe कीजिए channel को if you're not subscribed. Leave a like on this video. I will be doing more FPL videos and FPL shorts. Just me. This was a tester right now, first time around. For the ones who asked me earlier, Salah is going to be my free transfer of the week. -4 तो मुझसे नहीं लूँगा, but maybe I have 5 more minutes, so let's see what happens. Next live stream I will be on till the very end. मेरे को थोड़ा temptation है तो to stay on here also right now. I feel कि why not, ना? But यार ज़्यादा से ज़्यादा I think mostly done with this. So best of luck for this game week यार, and I hope कि you guys have a very good game week, and I hope United win. Mainly United win. But United don't win, at least I do well in FPL, तो कुछ तो consolation है. That's the main thing, right guys? You always fear कि at least, why do you play FPL versus Premier League? If you are playing in FPL, you can't be loyal to your team. ऐसे कुछ नहीं है यार guys. I play FPL because it's fun. I know there are times where Salah को मैं captain रखता हूँ, even though United is playing, because objectively I feel कि Salah is going to score better. So it's a head versus heart game. ज़्यादा कुछ नहीं है. Tomorrow if United is going to lose 4-0 to Liverpool and I have Salah captain, I would really wish Salah doesn't score. वैसे कुछ नहीं है यार. But it's a tricky game. FPL and Premier League, though, you can always keep the passion separate, and it does not mess each other at all. मैंने jokingly एक बार कर्ण से बात किया था when the one football episode guys की what would you pick, and I feel obviously any day I would pick. मैंने jokingly बोला I would pick winning FPL, but I feel your side winning a Premier League, your side winning the FA Cup, I would pick that over winning the FPL anyway, right? FPL is just casual, it's fun. But anyway, thank you so much for tuning in, and I will see you next week. Cheers, guys.